esteemed colleagues, and distinguished guests. I am Ilsa Ali, and I stand before you today to shed light on the captivating world of derivative markets. But before delving into the intricacies of various types of derivatives, it is important to establish a firm foundation by understanding the derivative market itself. So, what basically a derivative market is? A derivative market it is a place where buying and selling of derivative instruments take place. Along with this, these markets play a significant role in managing risk, facilitating price discovery, and offering opportunities for the market players. Now, moving towards the main focus of our topic, that is derivative instruments. Derivative instruments are basically the financial contracts that are used to minimize risks, and they derive their value from an underlying assets like stocks, bonds, commodities, and currencies. Along with these derivative instruments promote market efficiency by allowing participants to express their views on value of an asset, an underlying asset, and hence facilitating more price determination. So, as I have quoted that derivative instruments are used to minimize risks, but how? Let me explain it with the help of an example. Let's consider that there is a boy named Aslam who gave 10 lakh rupees to his friend, and he will get that 10 lakh rupees back in March 2024. Now, what happens is that today the dollar rate is 230 rupees, let's suppose. But Aslam thinks that by March 2024, Pakistan will default and the currency rate will go to 700. So this is a huge risk for him. Why? Because he won't get a good return. So what do? He thinks of a plan like what to do. He thinks to go on a reputable institution and get some advice from them. He goes to the bank and asks bank to give him a fixed amount of rate till March 2024. No matter whatever the currency rate may be at that time, he says that he wants a fixed currency rate till March 2024. Bank of Punjab, let's say he goes to Bank of Punjab. Bank of Punjab now says that till March 2024, they will give him $2 rate at a rate of 280 rupees. Now, what is this 280 rupees? This 280 rupees saved him from risk. As if in future the country defaults or the currency rate declines or depreciates, he still gets a fixed amount of exchange rate that is determined. So Aslam gets happy and like he's happy. So what he does that he agrees to the terms and conditions and enters into a contract with the bank. Now bank what bank does is signs a contract with Aslam. There is a page where there's the date of entering contract, the specific exchange rate, and the date till when the exchange rate will be given to Aslam will be mentioned. All these details will be mentioned in a page, and this page is basically a derivative instrument that Aslam will carry with himself. So this was basically a short example of derivative instruments. Now let's move towards the types of derivative instruments. There are 4 types. Number 1 is over the counter. Number 2 is exchange traded, swaps, and options. Over the counter, as its name suggests, it's related to when a third party instead of any reputable institution is involved, we call it an over counter. For example, if a broker is involved in arranging a contract, what we say it is over the counter. Second is the exchange traded. Exchange traded happens when a third party is involved. No, sorry, not a third party, but a reputable institution like bank is involved. This is known as exchange traded. And the further types of exchange traded will be discussed my next group member. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ali, and my topic of discussion is forward derivative. A forward derivative serves as a valuable instrument in the derivative market. It allows participants to manage risk,
it makes a contract to fix a price for coming years. It is a non-standardized contract and purpose to minimize price risk. For example, if a farmer sell a cotton to textile industry, both parties make a contract to minimize their loss because cotton price ups and downs per year. Uh, there are two types of risk in forward derivatives: default risk. If company defaults, the market loses money. Company defaults or for the cotton. That is not between parties and not given to third party. And that's all from my side. And Abdul Wahab Kassar, please proceed further. Next participant, please continue. मैम उसकी आवाज शायद नहीं आ रही। नहीं, ऑडिबल नहीं है, आपकी आवाज नहीं आ रही वहाब। आप अनम्यूट करें माइक को, दोबारा ट्राई करें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए अहमद, आप आ जाएं। मैम में ये जो अरसा के ग्रुप में है ना अहमद, वो मोहम्मद अहमद। okay. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Ahmed, and today my topic of presentation is options. Option is an agreement between the buyer and seller which gives the right to buy and sell at a particular price of a particular stock. Next point लिखा हुआ है stock price. Stock price means an agreed price for which both the parties agreed. Next slide.
There are two types of options, call option and put option. Call option is right to buy. For example, suppose I think that price of ABC company stock will increase. So I go to the company and I say to them that I want your 1,000 shares till 1st July. So you can now give me a particular rate, so that now the company's price is $10 and it gives me a price of $12 per share. So I agreed upon this price, and this is our strike price. So on 1st July, I will buy those shares in exchange of some premium. So this is our call option. Next is put option. Put option is right to sell. For example, I think that the price of ABC company's share will decrease. So I go to the company, and again the same phenomena. Company gave me $8 price per share with an expiry period of 1 month. For that, I have to give the premium, let's say $1 per share. So whether the stock price increase or decreases or remain the same, it doesn't matter. It is not an obligation for me to fulfill put option, but due to this, I have protected myself from potential risk. That's all from my side. Wahab, are you there? Okay, next group. Group number 2, Ali Sher. ग्रुप नंबर 2 में से कोई मौजूद है इस वक्त? Okay, group number 3, Aisha. Yes, ma'am. चलिए शेयर करें स्क्रीन एंड स्टार्ट.
आशा, there is no voice. अपना mic unmute करो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही. Assalamu alaikum. My name is Khadija Yasin. Today I present my topic, Generally Accepted Accounting Principle, along with my group member Asha Sultan and Muhammad Usman Mazhar. Next slide. Okay, starting with accounting. What is accounting? Starting with the definition of accounting. Accounting is a process of record of business transaction. All financial business transaction recorded are called accounting. Next slide. Second definition of action of keeping financial records are accounting. What is GAAP? GAAP, there are some common GAAP rules, which is the rules that govern accounting are called GAAP. And second one is GAAP is a common as a set of standard principle and procedure. And third one is combination of authorized standard, which is set by policy board. थर्ड वन इज ऐसे हमारे पास अकाउंटिंग में कौन कौन सी चीजें आ जाती है, जिसमें हमारे पास तीन आ जाती हैं, विच इज वन इज एसेट, सेकंड इज लायबिलिटीज एंड थर्ड इज इक्विटी. एसेट इज विच इज लैंड, हमारे पास एसेट आ जाएगा, और लायबिलिटी की एग्जांपल हमारे पास आ जाएगी बैंक डेब्ट, एंड इक्विटी की हमारे पास जो है एग्जांपल वो हमारे पास इस तरह आ जाएगी, इफ समवन ओन्स अ हाउस वर्थ 4 lakh and owes 3 lakh on the mortgage, that means the owner has 1 lakh in equity. This is an example of equity. Next slide, Asham. GAAP principle. GAAP principles are divided into two parts, which is one is accounting concept and second one is accounting convention. अकाउंटिंग कन्वेंशन हमारे पास में आ जाता है कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी एंड फुल डिस्क्लोजर एंड मटेरियलिटी. दिस इज अ 4 वाइडली रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग कन्वेंशन. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट कॉन्सेप्ट है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, विच इज फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, एंड सेकंड इज इट इज अ हेल्पफुल, ये हमारे पास हेल्प कर रहा होता है बिजनेस अफेयर्स एंड रिकॉर्ड को कीप करने के लिए इन अ प्राइवेट एसेट प्रॉपर्टी. थर्ड वन इज अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अ प्रॉपर्टी शोन एज अ लायबिलिटी. दिस इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स. And fourth one is amount paid if the personal expense for properties are shown in drawing for the capital of the proprietors. This is all from my side. Next from my group member Asha Sultan. Assalamualaikum. My name is Aisha Sultan and I'm here to represent our topic which is related to accounting concept. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, दिस इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. ओके, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इज बेसिकली is an important accounting concept that is based on the theory that a company should be recording only those transactions that can be measured and expressed in a monetary term on a financial statement. ठीक है, the concept of money measurement associated to such a transaction of a business that can be recorded in terms of money in a book of accounts, and recording are kept in a monetary unit, not in the physical. ठीक, अच्छा, it is being used as to provide a common yardstick for the measurement. Now the next concept is dual accept concept. Basically the monetary measurement limitations are that the concept does not consider the impact of the inflation, which is an increase in the price of the goods and decrease in the amount of goods, okay, that an individual or a company can purchase with that amount of the money.
On the other side, the advantage of that concept is that a user of a financial information can easily compare the results of one business with another, since financial results are expressed in monetary terms. The examples of that recording including the payment of taxes, purchases for the suppliers, and the sales to customers. The dual concept is basically refers to the two different nature of a business in which a company are indicated each transaction made by the business impact the business in two different aspects which are equal and opposite in nature. The concept for the basis of dual entry concept and is used by all the accounting frameworks for generating accurate and reliable financial statement according to the dual concept. The accounting record must be reflect the same to show the accurate movement of the funds, just like in the balance sheet where the one side there's a liability and other side there's an asset, so that we can if the total sum is not same, so we can say that there is some misleading or misconceptions हमारे पास वहाँ पे आई है. ठीक है. For instance, a buyer pays cash in a result for purchasing items while the seller gains cash for the sold items. So both the accounting records are same. Okay. Now we talk about our next concept, which is about machine concept. Machine concept is basically is a basis of recording expense including two steps. Identify all the expense accurately during the accounting period. Accounting period is basically of about 12 months. It's depend करता है कि months पे भी हो सकता है, हमारे पास companies पे depend करता है. तो basically उसके अंदर जितने भी machines आई हैं उनकी recording करना, जितने भी expenses हैं उन सबको record करना, उनके book keeping करना is basically an accounting concept, so that जब last में आप अपनी financial statement कोई भी company बनाएगी तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी अपने जो एक्सपेंसेस ओवर द ईयर है उनको कैलकुलेट करने में. ठीक है. तो बेसिकली मेजर द एक्सपेंस एंड मैच द एक्सपेंसेस अगेन विद द रेवेन्यू अर्न, सो दैट आपको पता चलेगा कि हमारी कंपनी के अंदर कोई मिसलीडिंग हुई है या कोई मिसकंसेप्शंस हुई है तो वो आप उनसे बचे रहेंगे. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अबाउट accounting concept, ongoing concern. Ongoing concern is basically a fundamental principle of the accounting. It assumes that during and beyond the next physical period, the company will complete its current plans. जो भी उसके प्लान्स है फ्यूचर, उसके जो करंट प्लान जो उसने अपने ओवर द ईयर उसने डिसाइड किए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग यूज इज एग्जिस्टिंग एसेट्स एंड कंटिन्यू टू मीट हिज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, जो कि इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अगर आपके पास आप इन चीजों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो मे बी आपकी जो प्लान्स हैं या जो आपने अपने मिशन या विजन डिसाइड किए हुए हैं आप उनको फुलफिल ना कर पाओ. ठीक है. नेक्स्ट इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में हमारा जो नेक्स्ट आ जाता है वो कॉस्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है. हमारा जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट इज बेसिकली मींस दैट आइटम नीड टू बी रिकॉर्ड एज अ एक्चुअल प्राइस, जो उसकी एक्चुअल प्राइस है. ठीक है. जो उसकी एक्चुअल प्राइस है. इट इज द सेम वे व्हेन अ बायर बायज प्रोडक्ट एंड द रिकॉर्डिंग इज डन बेस्ड ऑन द प्राइस पेड. फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी ले लें तो कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बिजनेस परचेजेस अ प्लॉट for 40,000 in 2019. ठीक है. That is planned to be used as a parking lot and whatever. In 2022, the price of that land has become 80,000. The business अब business को किस तरीके से रिकॉर्ड करेगा इसकी एक्चुअल वैल्यू पे. ठीक है. जो कि कॉस्टिंग प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है और उसकी एक्चुअल वैल्यू हमारे पास 40,000 है. तो जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी उसमें उस लैंड की जो प्राइस है वो बेशक हमारे 2022 के अंदर उसकी जो प्राइस थी वो ज्यादा हो गई है बिकॉज हमारी मनी की जो वैल्यू थी वो उसकी वजह से. बट जो एक्चुअल हमारे पास प्राइस है जो कि 40,000 थी, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड होगा वो उसी के ऊपर होगा. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अबाउट accounting period. Accounting period is basically a span of time at the end of which financial statements are prepared to
and throw light on the result of the operations. अच्छा, accounting period is any time frame used for the financial report, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस 12 month हो सकते हैं, ठीक है. ये business पे depend करता है. There may be a different accounting period for the various businesses, ठीक है. An accounting period is a span of time that converts certain accounting functions. It can be either a calendar or हम कह सकते हैं कि official year हो सकता है, but also week या quarter या month हम इसको ले सकते हैं. Accounting period are created for reporting and analyzing purpose, क्योंकि जब over the year आपने जितने भी अपने expenses किए होते हैं, आपके जितने भी book keeping होती है, आप उसको एक देख कर उसके अपनी प्रॉपर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जो कि आपके आगे भी जाके हेल्प करती है, क्योंकि जब आपके इन्वेस्टर्स आपको कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वो उस चीज को देखते हैं, ठीक है. नाउ अगर हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है उसकी तरफ आए तो उसमें हमारे पास फुल डिस्क्लोजर आ जाता है. फुल डिस्क्लोजर का मतलब ये है कि आपकी जो कंपनी है वो अपनी ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, जैसे हमारे पास एक पोर्टफोलियो आता है जिसके अंदर कंपनी अपनी ईच एंड एवरी माइनर से माइनर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करती है, ठीक है. इस वजह से कंपनी वुड रिपोर्ट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हो गई आपकी लाइबिलिटीज, आपके एसेट्स, आपकी करंट पोजीशन मार्केट में क्या है, आपके जो फ्यूचर प्लान्स हैं, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं. इससे बेसिकली क्या होता है कि जो आपका इन्वेस्टर होता है, क्योंकि जब आप फुल डिस्क्लोजर करते हो अपनी कंपनी का, तो आपका इन्वेस्टर उस इंफॉर्मेशन के ऊपर ये डिसाइड करता है कि वेदर उसको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना, वेदर कि आपकी कंपनी ओवर द ईयर या इन फ्यूचर आपकी कंपनी मार्केट में कहाँ स्टैंड करेगी, ठीक है. क्योंकि ऑफ कोर्स जो इन्वेस्टर होता है उसका सारा जो कंसर्न होता है वो उसके अपने बेनिफिट पे होता है, क्योंकि वो मनी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा होता है. तो जब आप फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि आप अपनी जितनी भी कंपनी की माइनर से माइनर और डीप से डीप इंफॉर्मेशन है वो अपने पोर्टफोलियो के अंदर देते हो. उससे क्या होता है कि आपकी कंपनी जो इन्वेस्टर होता है वो प्रॉपर डीपली जजमेंटली तौर पर आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है या ऑल एसेट या लायबिलिटी, आपके जो आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, उसको देख के ये एनालाइज करता है कि आया उसको आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना भी चाहिए कि नहीं. सो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये इम्पोर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए सर्वाइव करने के लिए. नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है, दिस इज अबाउट मटीरियल. अच्छा जी, इस कॉन्सेप्ट में बेसिकली इस concept is accounting refer to the concept that all the material items should be reported properly in a financial statement. Over the year आपके जितने भी items आप अपनी कंपनी के फॉर यूज या प्रोडक्टिविटी के लिए, प्रोडक्शन के लिए जितने भी आप items लेकर आ रहे हो, ठीक है, उनको फुली जितने भी उनके एक्चुअल प्राइस है उनको रिकॉर्ड करना, ठीक है, ओवर द ईयर, ताकि लास्ट में जब आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है. So this is all from our side. If anyone have any question, they may ask. आशा, एक और मेंबर भी है ना आपके ग्रुप में? मैम एक्चुअली उनका नेक्स्ट इशू है, वो गांव गेम है, तो इस वजह से वो दे नहीं पा रहे. ठीक है, सही है, ओके, थैंक यू. मैम उनका प्रेजेंट कर दिया हम लोगों ने, उनका पार्ट हमने प्रेजेंट कर दिया. ओके, नेक्स्ट ग्रुप Excuse ma'am, can I present Excuse me. next? जी. मैम हमारे मेंबर ईमान का इशू है, वो हॉस्टल आइटम, उसने घर जाना है, तो हम प्रेजेंट कर दो पहले. कर लें. कौन सा ग्रुप है आपका? ग्रुप 6. ठीक है, स्टार्ट करें. अस्सलाम वालेकुम मैम. बिस्मिल्लाह. वालेकुम सलाम. मैम मुझे अभी एक्चुअली 2 बजे पूरे एकेडमी जाना है, तो काइंडली अगर बस इनके इस ग्रुप की बात कर लेना. आपका सेकंड नंबर था लेकिन आप थे नहीं उस वक्त. मैम आप सारे इधर ही हैं. ठीक है, इनके बात कर लीजिएगा. मैम कैन आई स्टार्ट? जी प्लीज. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. Firstly, I would thank you all for joining us. Let me introduce myself, Nimra Zulfikar, and along with my group members Akasha Khurshid, Iman Farouk, and Muniba Mudassir, we are presenting our topic. As you see on the screen, our topic is important regulation in investment banking. Next, please. Slide. Iman, kindly move to next slide. Back introduction. So let's start with the introduction. It is common
for investment bankers to be blamed after almost every financial crisis happened in 1933 and is also happened in 2008. जैसा कि हम लोगों को पता है कि बैंक्स में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 1933 में और एक 2008 में, जिसके बाद हमारे बैंक्स के लिए एक कानून बनाया गया था विच वाज वेरी अनयूजुअल, लाइक उससे पहले वो हमारे इंस्टीट्यूट्स में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी. नेक्स्ट स्लाइड. So let's start the Glass-Steagall Act. The Glass-Steagall Act came into effect in year 1933 after American stock markets can crashed in the year 1929. The main provision was the separation of concern. This means that the commercial banks and investment banks had to be separated from each other. This is because it was believed that the crash of 1929 was caused due to excessive money pumped in the commercial banks, and the money used belonged to the depositors. To ensure the fund raised by banks used for lending rather for speculative purpose. It is common for commercial banks to make unsound loans to companies. These loans were supplemented by the share purchase of some companies by the investment banking wing of the bank. The main idea behind this act was to ensure that the fund raised by the banks are used for lending rather for the speculative purpose. Thank you. Now Akasha will proceed it further. Assalamu alaikum everyone. My name is Akasha Khurshid and my presentation topic is Securities Exchange Commission. So basically Security Exchange Commissions जो है create हुआ था 1934 में, और ये create हुआ क्यों था, तो because of कुछ रीजंस की वजह से क्रिएट हुआ था. ये एक्टिविटीज को लुक आफ्टर करता है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट की एक्टिविटीज को ये लुक आफ्टर करता है. और थर्ड है कि ये रेगुलेट ईच एक्सपेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ऑपरेशन. सिक्योरिटी मार्केट सबसे मेजर रोल है सिक्योरिटी मार्केट में वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का है. ये जो है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं सिक्योरिटी मार्केट्स में. दैट्स व्हाई जो है सिक्योरिटी मार्केट्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पे अपना चेक एंड बैलेंस अच्छे तरीके से रखता है. यानी इन्वेस्टमेंट बैंक को अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है सिक्योरिटी मार्केट से पहले, देन वो फर्दर अपने परफॉर्म्स और अपनी सब कुछ कर सकते हैं. लेकिन सिक्योरिटी मार्केट जो है इनकी परफॉर्मेंस, इनके टास्क, इनकी एवोल्यूशन पे हर चीज पे चेक एंड बैलेंस लगती है. बेसिकली सिक्योरिटी मार्केट जो है वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का एक मेजर पार्ट है, जिसकी वजह से इसको अपना मतलब ये जो भी काम स्टार्ट करती है इसको सबसे पहले सिक्योरिटी कमीशन से अथॉरिटी चाहिए होती है. यानी उससे इसको अथॉरिटी चाहिए होती है कि फर्दर ये लोग आगे काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते. इसीलिए जो है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के ऊपर सारा चेक एंड बैलेंस जो है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का होता है. That's all from my side. Now Iman will inform you further. Assalamu alaikum and good afternoon everyone. I hope I'm audible to all. My name is Iman Farag and I'm here to present the topic which is the Investment Advisor Act. This act was created in 1940. The Investment Advisor Act 1940 ये एक का फेडरल लॉ था जो कि जिसमें रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के प्रेजेंट की गई थी, जो कि एक्ट था वो 1940 में पास किया गया था. इसका मेन ये था कि सेकेंड वन पॉइंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स. दैट मीन्स के अब वो ये क्लाइंट्स को बेटर गाइड करते हैं, एडवाइस करते हैं कि रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग आपने किस सिक्योरिटीज में करनी है, जैसे स्टॉक है, बॉन्ड है, म्यूचुअल फंड्स हैं, और किस तरह के एक्सचेंज रिलेटेड फंड है. समटाइम्स जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो है वो पोर्टफोलियो सिक्योरिटीज में भी पोर्टफोलियो सिक्योरिटीज को भी मैनेज कर रहे होता है. उनका मेन जो पर्पस रोल यही होता है कि एक यूएस का फेडरल लॉ है जो कि बेसिकली ये अपनी जो है सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन ग्रांट करता है बाय द 4 डिफरेंट वेज. ये क्या करता है कि मॉनिटर करता है फिडुशियरी ड्यूटीज ऑफ एडवाइजर्स. द सेकंड वन इनका ये रोल होता है कि ये इम्पोज करता है रूल्स को, किस तरह के उन्होंने सेफ कीपिंग करनी है क्लाइंट्स के एसेट्स को. द थर्ड वन इज किस तरह के रूल्स उन्होंने करने होते हैं द कॉर्पोरेट गवर्नेंस. एंड द फोर्थ वन इज द सुपरवाइज किस तरह से करना होता है एडवाइजर्स को रिलेटेड टू द रिकॉर्ड कीपिंग. सो इट आल्सो प्रोवाइड ये कमीशन भी चार्ज करते हैं फिर इनके, लेकिन इनके जो है वो उन पे कुछ लिमिटेशंस होती हैं. देन मूव टुवर्ड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट. सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट ये जो था वो
1975 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ये जो है वो this act also impacted investment banks since they are involved in primary brokerage operation, also extensively lead to deal with other brokers. Means ये अब प्राइमरी ब्रोकरेज होता है क्या बेसिकली, इस तरह के किसमें इसमें बंडल ऑफ सर्विसेज इन्वॉल्व होती है, लाइक मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है और किस तरह के वो हेज फंड्स और सिमिलर क्लाइंट्स के साथ उनके जो प्राइमरी जो उनका मेन रोल होता है वो किस तरह से उन्होंने कैश को मैनेज करना है, सिक्योरिटीज की लेंडिंग और इस तरह के फर्दर मोर चीजें जो होती हैं वो प्राइमरी ब्रोकरेजेस में आ रही होती है। प्राइमरी ब्रोकरेज और ब्रोकर में क्या फर्क होता है, यही होता है कि ब्रोकर जो होता है वो एक लिंक क्रिएट करता है बिटवीन द बायर एंड सेलर, जो ट्रांजेक्शन जो होती है उनको ले रहा होता है, लेकिन जो प्राइमरी ब्रोकरेज होता है उसके फर्दर उनके गोल और स्ट्रेटेजी होती है कि किस तरह से उन्हें एक्टिविटीज को एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज के फॉर्म पे करना है। तो ये बेसिकली इनमें डिफरेंस होता है कि उन्होंने और किस तरह से इन्वेस्टिंग करनी है, किस तरह से लोन ऑब्टेन करना है, किस तरह के परचेजिंग साइड पे जाना है। तो ये मेन डिफरेंस होता है बिटवीन द ब्रोकरेज एंड ब्रोकर। And this act provided a type of insurance by the clients of the broker that it means ये इंश्योर करते हैं कि मतलब इनमें किसी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं होगा, किस केस में कोई लॉस नहीं होगा, जो भी एसेट्स और कैश मैनेजमेंट है और ये इनकी सिक्योर होगी। सो ये जो एक्ट था, ये प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो इसलिए क्रिएट किया गया था ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन की जाए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Assalamu alaikum. I am Muniba Mudassir, and the next act I am going to present is Graham-Leach-Bliley Act. It is also known as GLB Act. ये एक्ट 1999 में पास हुआ था। इसको रिपील ऑफ ग्लास-स्टीगल एक्ट भी कहते हैं। रिपील कहते हैं कि जब कोई एग्जिस्टिंग लॉ को रिवर्स किया जाए या रिवोक किया जाए। 1990s में यूएस के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने ये क्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि जो रेगुलेशंस हैं वो इनको ग्रो करने में या डाइवर्सिफाई करने में हर्डल है, क्योंकि इस एक्ट से पहले जो कमर्शियल बैंक्स थे और जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स थे वो सेपरेट थे अकॉर्डिंग टू ग्लास-स्टीगल एक्ट। देन इसके बाद ये एक्ट पास हुआ था, इसको रिपील किया था, ग्लास-स्टीगल एक्ट को रिपील किया था, और उसके बाद इस एक्ट में कमर्शियल और इन्वेस्टमेंट बैंक्स को दोबारा से कंबाइन कर दिया गया था, जिससे बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और सिक्योरिटीज फर्म्स आपस में कोऑर्डिनेट करके ब्रॉडर वे में अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो है अपने कस्टमर्स को ऑफर कर सकें। ये एक्ट जो है वो फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी के फेवर में भी गया था। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वॉल्कर रूल। वॉल्कर रूल बनाया गया था 2010 में सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस के बाद। इस रूल के अकॉर्डिंगली जो बैंक्स हैं वो हेज फंड्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज हेज फंड्स रिस्की भी होते हैं और वॉलेटाइल भी। बट जो प्रॉफिट होता है बैंक को इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, उसमें से इन्वेस्ट करना चाहिए बैंक को, ताकि अगर कोई लॉस हो भी जाए तो लाइबिलिटीज अफेक्ट ना हो। सो दैट्स ऑल वी वांट टू शेयर विद यू। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच मुनीबा। चलें जी, नेक्स्ट आ जाओ बीरबल, ग्रुप नंबर 2। मैम बीरबल के बाद हम दे दें। जी ठीक है, लेकिन बीरबल मैम कहाँ है वो? मैम एक्चुअली हमारे कुछ ग्रुप के जो मेंबर है वो नहीं है प्रेजेंट अवेलेबल। फिर हम जो सेकंड सेशन करेंगे होपफुली इंशाल्लाह आज 4 बजे 4 से 5 उसमें आप दे दीजिएगा। चलो मैम ये भी सही है। अभी मैम कोई है? एक्सक्यूज मी मैम, से साथ ना दे दो मैम, आप सॉरी, प्रेजेंट कर दो। चलें आप जिसने प्रेजेंट करना है वो प्रेजेंट कर लें। भी फिलहाल प्रेजेंटेशंस करते हैं। आई हैव ओनली 15 मिनट्स लेफ्ट। यार इनके 2 ग्रुप्स प्रेजेंट कर लें आप और फिर एक्सक्यूज हमें। मी जी बताएं। मैम, मैं अब्दुल वहाब बोल रहा हूँ। वो थोड़ा नेट का प्रॉब्लम होता है कि मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ अभी? किसी और ग्रुप के साथ ज्वाइन कर लो। ओके मैम, ठीक है सर। ओके चलें जी। मैम आप उस्मान को होस्ट कर दे, वो स्क्रीन शेयर कर रहा है। किसको? सॉरी मैम मोहम्मद उस्मान 2498। 98। ओके मैम आप प्रेजेंट कर दे मैम। ये मैंने उसको को होस्ट बना दिया। उस्मान यार स्लाइड शेयर कर, मैं इधर बिजार को भी लिंक भेज देता हूँ, अब्दुल्ला इकबाल को भी, वो दोनों भी ज्वाइन कर रहे हैं। तब तक दोस्त स्लाइड शेयर कर दे। आपका सखावत ग्रुप नंबर कौन सा है? मैम ग्रुप नंबर 9 है। मेंबर पूरे ही नहीं है, तुमने ज्वाइन क्यों किया? भाई पूरे हो जाते हैं, हम 2 मिनट दो यार, गुस्सा क्यों कर रहे? सखावत तो पता है ना कि ये लाइव है। नहीं मैम, इस बात का नहीं पता था, चले मैं
मैम वो दोनों ज्वाइन हो रहे हैं तो स्मार्ट स्क्रीन शेयर कर रहा है। स्मार्ट स्क्रीन शेयर कर दो दोस्त। ओके स्मार्ट ग्रुप 5 समार तारिक मोइज दानियाल अनस यस मैम जी। आप स्टार्ट कर लें स्लाइड शेयर कर लें स्लाइड्स वगैरह और स्टार्ट कर लें मैम हम दो बंदे हैं, हम कर दें मैं और सर। तो बात सुनो स्टार्ट करो ना मैं तो वेट कर रही हूँ स्टार्ट करें फिर क्या ग्रुप नंबर है आपका ग्रुप नंबर 4 में। बस ये ग्रुप नंबर 4 की बात करना फिर अब चलो स्टार्ट करो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा प्रेजेंटेशन जो है वो डेरिवेटिव मार्केट्स के ऊपर है और हमारे ग्रुप मेंबर्स में और अशफाक अली। डेरिवेटिव मार्केट्स एक्चुअली होता है कि डेरिवेटिव मार्केट्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट व्हिच ड्राइव देयर वैल्यूज फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ अंडरलाइंग एसेट। इसका मतलब ये है कि डेरिवेटिव मार्केट बाइंग सेलिंग होते हैं। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जो है डेरिवेटिव मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग होते हैं। तो डेरिवेटिव मार्केट जो है ये हमारे रिस्क को क्या कहते हैं, मिनिमाइज करते हैं। इसके फर्दर कुछ टाइप्स है और टाइप्स में हमारे पास है फॉरवर्ड, फ्यूचर और ऑप्शन एंड स्वैप। Forward is agreement between two enterprise, buyer and seller. The buyer agrees to buy underlying asset from the other party. The seller, the delivery of the assets occurs at later time, but the price is determined at the time of purchases. Forward जो है इसमें ये होता है कि ये नो स्टैंडर्डाइज क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कोई इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व नहीं होता और इसमें रिस्क ज्यादा होता है और ये ओवर द काउंटर मार्केट होता है। नेक्स्ट स्लाइड। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट दैट रिक्वायर्स पार्टी टू एग्रीमेंट आइदर टू बाय और सेल समथिंग एट डिस्टिंग्विश्ड फ्यूचर डेट एट predetermined price. Future contracts are categorized either commodity future or financial futures. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है इसमें ये होता है, ये प्री डिटरमाइंड प्राइस और ये एक लीगल एग्रीमेंट होता है जिसमें इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होता है और ये एक्सचेंज ट्रेड होता है इसमें। और इसमें हम रिस्क जो है कम होता है और प्री डिटरमाइंड प्राइस एट फिक्स टाइम इसमें गिवन होता है और ये लीगल एग्रीमेंट होता है। इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और इसमें क्या होता है, रिस्क जो है बंदे को कम होता है क्योंकि इसमें बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड अशफाक प्रेजेंट करेगा। अस्सलाम वालेकुम मैम, दिस इज मी अशफाक अली। टुडे माय प्रेजेंटेशन टॉपिक इज ऑप्शन। ऑप्शन में ये होता है कि मैम हमारे पास किसी कमोडिटी को बाय या सेल करने के लिए क्या होती हैं, ऑप्शंस होती हैं कि हमारे पास क्या होती है, राइट होती है कि हम किसी चीज़ को बाय या सेल कर सकते हैं।
उसके दो टाइप्स हैं, और पहला है पुट ऑप्शन और दूसरा कॉल ऑप्शन। नेक्स्ट स्लाइड कर दें। कॉल ऑप्शन में ये होता है कि मैम हम किसी कमोडिटी को क्या करते हैं, बाय करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके हम किसी कमोडिटी को बाय करते हैं, मतलब अगर हमें पता हो कि फ्यूचर में डॉलर की कीमत बढ़ जाएगी, तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट में एक एग्रीमेंट करते हैं उसके साथ कि किसी जिससे सा हम डॉलर खरीद रहे हैं कि फ्यूचर में हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि प्राइस बढ़ जाएगी, तो हम एग्रीमेंट करते हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट में एग्रीमेंट करते हैं कि जो अगर फ्यूचर में अगर प्राइस बढ़ भी गई तो आप क्या करेंगे, जो प्रेजेंट रेट है इसी रेट में हमें क्या करेंगे, डॉलर वो हमें पे करेंगे। अगर वो अगर कम भी हो जाए या वो बढ़ जाए तब भी वो क्या होंगे, वो इसी रेट पे ही आपको क्या करेंगे, वो सेल करेगा, जो एग्रीमेंट है उसी बेस पे। दूसरा है इसके साथ पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन इसमें ये होता है कि एसेट को सेल करने की हमारे पास क्या होती है, ऑप्शन होती है, जिसमें अगर हमारे पास एक वो है डॉलर है, वो हमें पता है कि मार्केट में क्या होगी, इसकी प्राइस बढ़ेगी या कम होगी, हमने एक एग्रीमेंट की हुई है ऑलरेडी। तो अचानक से क्या हो गए, मार्केट में डॉलर महंगे बिक रहे हैं, और जिस बंदे के साथ हमने एग्रीमेंट की है उसमें यह है कि डॉलर की कीमत कम है, हमने 300 रखा था और मार्केट में वो सेल हो रहा है 350 रुपये का। तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम मार्केट में जाके अपना क्या करें, वो डॉलर आसानी से सेल कर सकते हैं। और ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है मैम, पुट ऑप्शन। और उसके साथ आ गया स्वैप। स्वैप में ये है कि मैं वो इसमें ऐड नहीं किया, वो स्वैप में हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट को देख के क्या करते हैं, कमोडिटीज को आपस में एक्सचेंज करते हैं, कि मतलब वो इसमें ये होते हैं कि डिफरेंट इंटरेस्ट बैंक या कोई वो हमें क्या करते हैं, शो करते हैं, वो क्या करते हैं, हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को उस इंटरेस्ट बेस को देख के क्या करते हैं, आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं मैम। बस यही था, थैंक यू। एक ग्रुप हम और ले सकते हैं अगर कोई अवेलेबल है, तो उसके बाद फिर बाकी बात में देखी मैम जाएगी। उस्मान स्लाइड शेयर कर रहा है। ठीक है, उस्मान स्लाइड शेयर कर दो यार। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं, मैं हूँ, अब्दुल्ला इकबाल है, बिजार है और मोहम्मद उस्मान है। हमारा पहला टॉपिक है हेजिंग। हेजिंग बेसिक टेक्निक है रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, इसमें हम डिफरेंट मेथड्स या टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे डेरिवेटिव मार्केट्स और डेरिवेटिव्स हो गए। उसके बाद और अदर फेवरेबल मार्केट कंडीशंस को देखते हुए हम हेजिंग करते हैं और रिस्क को मिनिमाइज करते हैं। बाद में नीचे आता है मेथड्स ऑफ हेजिंग, जिसमें पहले तो चार आते हैं डेरिवेटिव मार्केट्स के सारे। इसमें पहला आता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें कॉन्सिक्वेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें लीगल ऑब्लिगेशंस हो सकते हैं, लीगल एक्शंस ले सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है स्वैप्स, जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सचेंज कर लेते हैं। हमें लगे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिस्की है या हमारा ये प्रोजेक्ट थोड़ा रिस्की है, तो हम उसमें स्वैप कर लेंगे, दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेंगे। मीन्स फिर हमारा ऑप्शन आ जाता है, जिसमें मीन्स हमें ऑप्शन दिए जाते हैं, राइट टू पुट, कॉल पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन। इसमें हमें एक में कहा जाता है कि हम राइट होता है हमारे पास, हम बाय कर सकते हैं, और एक होता है इसमें राइट होता है हम सेल कर सकते हैं। फिर हमारा आ जाता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इसमें हमारे पास कोई लीगल एक्शंस नहीं ले सकते। बेसिक ये एग्रीमेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर जुबान की बेसिस आपकी ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर नीचे आ जाता है डाइवर्सिफिकेशन, जिसमें अपना पोर्टफोलियो डिवाइड कर देते हैं, मल्टीपल जगह इन्वेस्ट करते हैं ताकि रिस्क हमारा मिनिमाइज हो जाए। फिर हमारा आ जाता है नेचुरल हेजिंग, यानी जो मार्केट ट्रेंड्स को देखते हुए हम हेज करते हैं कि ये मार्केट में चीज अभी इतने की है, ये आगे डॉलर कितने पे जाएगा। वो सारा जो तरीका है वो सारा हमारा नेचुरल हेजिंग में आ जाएगा। फिर हेज फंड से अब्दुल्ला इकबाल बताएगा। अब्दुल्ला इकबाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा टॉपिक है हेज फंड्स। हेज फंड्स आर फाइनेंशियल पार्टनरशिप दैट यूज पूल फंड्स। ये फाइनेंशियल पार्टनरशिप है जिसमें पूल फंड्स होते हैं और एंड एम्प्लॉय डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू अर्न एक्टिव रिटर्न्स टू देयर इन्वेस्टर। और मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज इस्तेमाल होती हैं ताकि इन्वेस्टर को फ़ायदा हो सके। दूसरा पॉइंट ये है कि दिस फंड में बी मैनेज एग्रेसिवली और टू मेक डेरिवेटिव्स एंड लेवरेज टू जनरेट हाई रिटर्न। तो जो ये पूल जो हैं इस्तेमाल या मैनेज होते हैं एग्रेसिवली, ठीक है, ताकि डेरिवेटिव्स बना सकें और
जिसकी वजह से हमें हायर रिटर्न मिले। अगला टॉपिक दूसरा मेंबर बताएंगे। जी मेरी तरफ से इतना ही है। और कोई मेंबर है आपके ग्रुप का? 2 बजे हमने इसे क्लोज करना है। वी हैव ओनली मैम 6 मिनट्स लेफ्ट। उस्मान के बाद बिजार रह गया, बिजार उस्मान है और बेजार है। ये लोग नहीं है अवेलेबल। मैम उस्मान तो स्क्रीन शेयर कर रहा है, इसके बाद इसी का टॉपिक था मेथड्स ऑफ हेजिंग फंड। ठीक है, चलें उस्मान। कोई इशू है तो बता दो, चैट पे बता दो लिख के। आपका माइक अनम्यूट नहीं है। मैम आप आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। Assalamualaikum. My name is Mohammad Usman, and today I'm going to present methods of hedging funds. Following are the methods of hedging funds, which include forward contracts. Forward contracts are financial agreements or standardized contracts that bind parties to buy or sell on a specific time period in future. जो आप फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट करते हो एक स्पेसिफिक डेट और टाइम में कि आपने उस डेट को पर्टिकुलर डेट को आपने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है, वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद स्वैप कॉन्ट्रैक्ट आता है। Swap is a financial derivative contract in which two parties agree to exchange cash flows or liabilities based on the specific terms and conditions which are beneficial for them. So ये एक्सचेंज अपना फाइनेंशियल कैश फ्लोस को करते हैं जिनमें इनको ज़्यादा डिविडेंड ज़्यादा पे आउट मिलता है उस लिहाज से। उसके बाद ऑप्शन आता है। ऑप्शन में ऑप्शन इज अ फाइनेंशियल डेरिवेटिव दैट प्रोवाइड्स द होल्डर विद द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय। तो इसमें ऑप्शंस होते हैं आपके पास के जो होल्डर होता है वो उसके पास ऑप्शन उनको दिए जाते हैं कि जो उसके हिसाब से जिसको डिविडेंड ज़्यादा पे आउट होता है वो वाला ऑप्शन वो चूज़ कर लेता है। उसके बाद फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में वो टाइप है कॉन्ट्रैक्ट की जिसमें जो दो पार्टीज़ हैं वो बाय करती हैं फिर सेल करती हैं स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट उसको कहते हैं। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन आती है। डाइवर्सिफिकेशन इज अ प्रैक्टिस ऑफ स्प्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अक्रॉस डिफरेंट एसेट्स सेक्टर्स इंडस्ट्रीज और जियोग्राफिक रीजन्स। वो डिफरेंट जियोग्राफिक रीजन्स में डिफरेंट सेक्टर्स में अपने ये एसेट्स को स्प्रेड आउट करते हैं ताकि इंक्रीज करें डिविडेंड को। उसके बाद न्यूट्रल हेजिंग आती है। न्यूट्रल हेजिंग इज एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी यूज्ड टू बाय ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टमेंट टू मैनेज द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्राइस मूवमेंट्स ऑफ अंडरलाइंग एसेट। तो ये न्यूट्रल हेजिंग वो होती है जिसमें पहली कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है साइन के आगे फ्यूचर में जो मर्जी प्राइस होगी आपने उसी प्राइस जो जिस पे कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उस बेस में आप उस अपने कॉन्ट्रैक्ट को करते हैं सेल आउट करते हैं। आगे बिजार बलोच हैं वो प्रेजेंट करेंगे। बिजार अब मेरा ख्याल है कि वो मीटिंग में नहीं है इस वक्त शामिल। मैम फिर आई थिंक सो एबटाबाद जा रहा था तो उसका मेरे ख्याल से वहाँ पे नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है। बिजार तो डिस्टेंस में लॉगिन जा रहे हैं। स्मॉल डिस्टेंस में जूम करो यार, मैं बता देता हूँ बिजार को। नहीं आप उसको छोड़ दें। प्रेजेंटेशन कंटेंट मैंने उससे डिजायर है जिसकी प्रेजेंटेशन थी उसको होना चाहिए ना। तो ये इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप बता रहे हैं, ये डजंट मैटर। तो वो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फिर अब नेक्स्ट जो सेशन अरेंज करेंगे उसमें बाकी ग्रुप्स की प्रेजेंटेशन हम कर लेंगे। अभी इसको एंड करते हैं, मेरी क्लास है दूसरे सेक्शन के साथ, तो इसको फिर मैं अभी एंड करती हूँ। ठीक है, बाकी मैंने नोटिंग कर ली है जिनकी प्रेजेंटेशन हो गई है, तो जो बाकी रह गए इंशाल्लाह उनके साथ अब हम करेंगे। अगर हमारी आज क्लास अरेंज हो गई 4 से 5 ऑनवर्ड्स
तो आज कर लेंगे, नहीं तो फिर आयशा जब टाइम बताएगी तो हम उस पर मीटिंग कॉल कर लेंगे और हम इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। कोशिश करें टाइम पे अपने जो नंबर है उस पर आप अवेलेबल रहें और ताकि जल्दी से हम इसे रैप अप करें। ठीक है, ठीक है मैम। ओके मैम। ओके, ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।